and you don't go to sleep while listening to me recite. It's a habit that when I ask a question, then I go to the chat and then I want to read something there. But आज तो कुछ पढ़ने को नहीं है, तो मैं खुद ही पूछ रहा हूँ आपसे, और खुद ही मैं ऐसा बैठा हूँ कि आप लोग लिख रहे होगे, टाइप कर रहे होगे, कुछ तो भेज रहे होगे. हाँ. So last HM I spoke on this beautiful thing that out of all the creations, and then I go to the इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी creations, we human beings only, we can do certain things which nobody else can do, and that's what makes us human. That's what makes us who we are. तो हर एक ना एक फितरत होती है, हर एक स्पीशीज की फितरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड इज देयर, चिड़िया है तो उसकी फितरत है उड़ना. उसको अगर आप चलते हुए देखोगे ना जमीन पे, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि वो चल कैसे रही. लेकिन जब वो उड़ती है ना, तो एक फ्री फ्लोइंग उसका एक स्वभाव दिखता है. तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें उसके उड़ने में कहीं संकोच नहीं है. इट इज जस्ट अ फ्री फ्लाइंग, एफर्टलेस फ्लाइंग होता है बर्ड. बट वो चिड़िया अगर चलती है जमीन में, इट लुक्स लाइक उसका पूरा एफर्ट जा रहा है चलने में, बिकॉज दैट्स व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक, उसकी फितरत है उड़ना. इफ यू सी एनी अदर एनिमल, फॉर एग्जाम्पल बंदर है, कभी बंदर दिखे तो रुक के जरा प्रणाम कर लेना, हमारे पूर्वज हैं. तो अगर आप बंदरों को देखोगे, मंकीज को देखोगे, उनकी फितरत क्या है? उनकी फितरत है कि वो शांत नहीं बैठते. आप उनको देख रहे हो and you might just be looking at them and they might be sitting on a branch, and आपने शायद उनको पीनट्स दिए, मूंगफली दिए, तो आपने आपके हाथ से वो पीनट्स लेके चले गए. फिर वो ब्रांच में, कभी आप जानो जू में कभी ऐसा होता है, आप कभी आपने किया होगा, तो आपके हाथ से वो मूंगफली ले जाएगा और वो मूंगफली तोड़ के खाएगा. एंड यू माइट बी जस्ट वंडरिंग एंड सेइंग, वाह, देखो कैसे तोड़ के मूंगफली खा रहा है. एंड सडनली वो मूंगफली खाते खाते वुड जंप फ्रॉम दैट ब्रांच टू अनदर ब्रांच, और फिर वहां जाके खाएगा. और आप सोच रहे हो कि यार देखो, खानी थी ना मूंगफली, तो फिर वहीं बैठ के क्यों नहीं खा रहा है शांति से? क्यों तो ये गुलाटी मार रहा है? क्यों तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में उड़ी मार रहा है? उड़ी इसलिए मार रहा है बिकॉज बंदर है, उसका स्वभाव है, उसका उसका चरित्र है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो. सो इट इज बाउंड बाय इट्स ओन नेचर. द बर्ड इज बाउंड बाय इट्स ओन नेचर. आप देखो ना, गली का टॉमी अगर है, तो वो उसका, या किसी के घर में भी अगर होगा, पेट डॉग होगा, तो इट्स बाउंड बाय इट्स ओन नेचर टू बार्क. वो भौंकेगा, उसका स्वभाव है, फितरत है उसकी. तो हर क्रिएशन की एक फितरत है. तो इंसानों की तो भी कुछ फितरत होगी. तो मैंने लास्ट एचएम में बताया कि सबसे सिंपल फितरत, सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग which makes us so very different than others, which makes us actually human being, is our ability to smile. And I said there are three gears which we have to understand. The gear zero is where we are kind of frowning, we are kind of stressed here. तुम्हारा चेहरा जो है ना, it is not looking very human. So you move from gear zero to gear one. So gear one is where you are smiling, you smile, and then gear two is where you laugh. तो हम इन gears में हमें खेलना चाहिए. Not that all the time you are laughing, not that all the time you are smiling, but can we laugh more? Can we smile more? And you will see that the more you laugh and the more you smile, the more human you look. There's nobody who's been accused of smiling. कि किसी को स्माइल कर रहा है तो उसको लोगों ने हटा दिया लाइफ से, या लोगों ने उससे मिलना बंद कर दिया. In fact, it has just been the opposite. The more you have a smiling face, the more people connect with you. Research ऐसा बोलती है that in a party when you enter, and I was reading this research long back, and वो इतना simple उसने क्लैरिटी दिया उस रिसर्च ने कि द मोमेंट व्हेन इट वाज ड्यूरिंग माय, आई थिंक अर्ली 2000 की बात है, एंड आई केम अक्रॉस दिस रिसर्च रिपोर्ट, एंड इट सेज कि आप किसी पार्टी में जाते हो ना, अगर आप अनजान हो, अगर आप ऐसे खोए खोए हो, सो रिसर्च बोलती है कि साइकोलॉजिकली वी आर अट्रैक्टेड और वी बिकम कंफर्टेबल व्हेन वी सी अ स्माइलिंग फेस. And that smiling face is naturally the face or the person whom you may go to and connect in that अनजान place. वो अनजानों में से फिर आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हो, या फिर उससे मिलने की आपके अंदर इच्छा होती है.
That's what a smile does. It makes the world around you comfortable. Imagine you are that person who's smiling at somebody who's walking in lost, and then your smile gives him a comfort. And that's how beautiful the smile is, how powerful a smile is. So can we smile a lot more in our living? And that makes us a bit human. And then, of course, along with smile comes laughter, and if you can laugh a lot more. And I think बहुत सारे काम जो है ना हो जाते हैं if you're smiling. Even the toughest of jobs can be done if you have a smile on your face. And मैं last time मैंने example दिया था of one of my experiences जहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल कॉट ऑन मी एंड उसने मेरे से फाइन लिया और मैं उसको समझा रहा हूँ कि मैं कैसे 1 मिनट के लिए गया और कैसे मैं आया हूँ. एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एंड कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी 200 रुपए फाइन, 200 रुपए फाइन. एंड आई थिंक वन ऑफ यू सेंड मी a picture of a place where cricket bats बिक रहे हैं. And because I had given that story कि मैं क्रिकेट बैट लेने गया और मैं within 2 minutes वापस आया, देखा तो कांस्टेबल ने मेरी गाड़ी को चालान लगाया हुआ. So I think one of you sent me a picture of cricket bats being sold on the roadside and said, "Sir, HM याद आया, वो 200 रुपए का फाइन याद आया." So love you for sharing and giving that picture. But I've seen it in my life and I've experienced it that many times when you talk to when you make requests with a smile, बहुत बार जो है वो रिक्वेस्ट जो है लोग मान लेते हैं. चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में कोई रिक्वेस्ट करनी हो, चाहे वो कहीं नॉर्मल किसी सिचुएशन में रिक्वेस्ट करनी हो. इफ यू रिक्वेस्ट विद अ स्माइल, very difficult to refuse a smiling face. So be on gear 1 more, and then if you can be on gear 2 where you can laugh, you can have a belly laughter. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि if you laugh, it is kind of a jogging for your internal organs. So that's the first thing which you need to take care of being a human. ये फितरत है ह्यूमन इंसानों की कि वो स्माइल करते हैं, वो हंसते हैं. और अगर आप स्माइल नहीं कर रहे हो, आप हंस नहीं रहे हो, you're like the bird who's walking on the ground. You're not flying. But when you smile, you're like the bird who is effortlessly gliding in the air. So that's the first aspect of being human. The second aspect of being human is, amongst all the species which are there in the world, we alone have the capability to cry. We alone have the capability to cry. There are some other species we see them crying, some animals we see them crying, but we are the only ones who can cry for various reasons. We are the only ones who have the emotional connect so very well with our physiological organs that we can express the most beautiful of emotions, the most powerful of emotions through our eyes. जो हम शब्दों से नहीं कह पाते, जो हम शब्दों से बयान नहीं कर पाते, हम आंखों से कर सकते. आंखों के अंदर भी आंखों के हम आंसुओं से कर सकते. एंड इट इज सच अ वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड. ये क्राइंग जो है इज नॉट अबाउट वीकनेस. दिस इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. दिस इज अ साइन ऑफ बीइंग ह्यूमन. कोई इंसान जब रोता है, एंड इट हैपेंस मेनी टाइम्स ड्यूरिंग माय प्रोग्राम्स, देयर इज समबडी हु इज शेयरिंग समथिंग, और वो शेयर करते करते वो इंसान बोल नहीं पा रहा है, अब आंसू निकल रहे. And in the audience somebody is there who will say, अरे कोई नहीं. And I would always make that audience shut up for the time, because वो इंसान जो रो रहा है ना, उसको आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए. वो इंसान जिसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसको आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए. उसको आपका एक्सेप्टेंस चाहिए कि इस समय मैं ऐसा हूं, एक्सेप्ट मी. बट हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि कोई भी हमारे आसपास कोई रोता है तो हमको लगता है वो वीक हो गया है, और हम उसके पास चले जाते हैं, उसको गले लगाते हैं. ना ना बाबा ना, ऐसा नहीं रोता. अरे वो तुमसे नहीं मांग रहा है वो सब उस तरह का सपोर्ट. वो कहता है एक्सेप्ट मी. जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे सुन रहे हो ना, वैसे मैं रो रहा हूं, मेरे को बस देखो. डोंट कम एंड काइंड ऑफ गिव मी दैट टॉक. इट्स ओके, डोंट गो थ्रू, इट्स ओके, एवरीबॉडी गोस थ्रू दैट, डोंट फील बैड, डोंट फील लो. वो नहीं चाह रहा है आपसे कुछ. कोई इंसान जब रो रहा है, he is just or she is just being human. वो सिर्फ इंसान बन रहा है उस समय, उसको रहने दो. Because you got to understand this, that eyes
और tears in the eyes, they can express the most awesome of communication. क्योंकि आंसू क्यों निकलते हैं? तो आंसू जो है उसका निकलने का जो कारण है वो भी अलग है, और आंसू के लेवल्स भी अलग अलग है। तो अगर आप बाइक चला रहे हो, शाम को और दिन में कभी आपने स्पीड से बाइक चलाई, एंड देन यू विल सी सम टीयर्स कमिंग आउट ऑफ योर आईज। दीज आर बेसिल टीयर्स, मतलब ये फिजिकली कुछ हुआ तो आपको हो गया। आप प्याज काट रहे हो तो कुछ उसकी अनियन की फ्यूम्स गई आंखों में तो आपको आंसू आ गए। दीज आर बेसिल टीयर्स, आ जाते हैं। इसमें कोई माइंड नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। ये आंखों में कुछ तिनका चले गया तो आपके आंसू आ गए। सो इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, इट्स अ फिजिकल मैकेनिज्म जिसके थ्रू आंसू आते हैं। तो एक तो ये फंक्शन है आपकी आंखों आंसुओं का। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आंसू दिए हैं तो कुछ तो होगा ना। फिर ना ऐसे ऊपरवाले ने डिजाइन कर दिया कि हाँ भाई चलो आंसू दे दो उनको, और किसी काम के नहीं है आंसू, या फिर आंसू जो है वीकनेस का साइन है। ऐसा नहीं है। इट्स अ ग्लैंड विच इज देयर एंड इट हैज सम यूसेज। तो बहुत से लोगों ने सबसे तुच्छ लेवल का यूसेज करा के रखा हुआ है कि कभी कुछ तिनका चले गया तो आंसू आ गए, कभी हवा चलेगी तो आंसू आ गए, कभी जुकाम हो गया तो आंसू आ गए, एंड कभी प्याज काट लिया तो आंसू आ गए। उसके ऊपर लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज दे फील इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, crying is not a sign of weakness, it's a sign of being human. So what are the levels of crying? तो पहला तो ये हो गया बेसिल टीयर्स। फिर उसके ऊपर आता है वेयर यू गॉट सम फिजिकल पेन, तो किसी ने चांटा मार दिया, और मे बी हाथ कट गया। एंड क्राइम का मतलब क्या है कि आप कुछ फील कर रहे हो, कुछ आप फील कर रहे हो, और वो फीलिंग इतनी इंटेंस हो गई है कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस फीलिंग को बयान कैसे करूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यू फीलिंग समथिंग एंड दैट फीलिंग इज सो इंटेंस दैट योर माइंड इज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड कि मैं इसको कैसे बताऊं। तो किसी ने आपको चांटा मार दिया, यू फील सो इंसल्टेड, you feel so very insulted, and you can't express that how much insulted you're feeling. मतलब आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो, आप उसको किसी ढंग से बयान नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि आप वो इंसल्ट की फीलिंग को अपनी आंखों से व्यक्त कर देते हो। दिस इज हाउ इंसल्टेड आई एम फीलिंग। क्योंकि आपकी बॉडी को मालूम है कि अगर आपने इमोशंस को दबा के रखा, अगर दबा के रखा, तो वो सिचुएशन तो ठीक है, आप उस समय कुछ नहीं होगा, लेकिन इंटरनली आपके जो ऑर्गन्स हैं उस पर बड़ा इंपैक्ट आता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इफ यू डोंट क्राई, or if you don't allow your eyes to cry, then some organ of your body will cry. That's for sure. It will kind of cause stress. तो कहीं बचपन से हमें ऐसा बोला जाता है, सिखाया जाता है कि men don't cry, the brave hearts don't cry, the strong guys don't cry. नहीं, ऐसा नहीं है। Crying is not a sign of weakness. It is just there. It is just being human. So सबसे तुच्छ लेवल के, सबसे नीचे लेवल के आंसू है जो हो जाते हैं because of some physical thing happen. फिर उससे उच्च लेवल के आते हैं where you cry because you are kind of emotionally stuck. You're not able to express your emotions. And then उसके अंदर भी कैटेगरीज होती है. So you're not able to express your emotions. So आप इंसल्ट फील कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत, तो कुछ लोग गुस्से में बोल देते हैं, कुछ लोग गुस्से में कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है गुस्से में जो है वो ना बोल पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, उनका इंटेंसिटी गुस्से का इतना है तो उनके गुस्से में आंसू निकल जाते हैं। माय सन सिद्धार्थ हैज दिस। उसको जब बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है एज अ स्मॉल चाइल्ड, तो वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसके आंसू निकल जाते हैं। एंड देन वी नो, अब तो घर बड़ा हो गया, बट देन एज अ चाइल्ड वी न्यू इफ ही इज एंग्री एंड इसके आंखों में अगर ऐसे दो तीन आंसू ऐसे टप टप करते हैं, वी नो ही इज वेरी एंग्री, सो वी गॉट टू हैंडल हिम इन दैट। सम चिल्ड्रन दे क्राई बिकॉज दे आर हंग्री, बिकॉज वो बता नहीं पा रहे हैं। एंड छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने, साल भर, 1.5 2 साल के, बस चिल्ला पुकार कर रहे हैं। एंड सम सीजन्ड पेरेंट वुड बी देयर एंड दे वुड टेल द पेरेंट और दे वुड टेल द मदर, अरे इसको फीड करो, उसको भूख लगी है। तो क्रैंकी हो रहा है,
उसको समझ नहीं आ रहा वो कैसे बताएं आपको। तो मैं भी आंसुओं के द्वारा बताता है कि भैया आई एम हंग्री, वो कहता है आई एम एंग्री, वो कहता है आई फील इंसल्टेड। तो ये नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने का भी जरिया होता है। फिर इससे उच्च उच्च लेवल का भी एक है, वेर यू आर वेरी हैप्पी, यू वेरी एक्साइटेड। आप कोई इंसान आया, यू नो सम गेस्ट ऑफ योर्स और सम रिलेटिव ऑफ योर्स, and he comes again, gives you a surprise, and you're so very happy to see that surprise, you're so very happy to see that person। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे उसको बताएं, व्यक्त करें। And suddenly the mind does not comprehend how to communicate, the mind kind of gives a signal of happiness through the tears। इंसान रोना चालू कर देता है। So another level of expression through the tears। कभी सोचा आपने कि क्या काबिलियत है हमारी आंसुओं की, कि क्या कम्युनिकेशन कर सकती है? एंड वी हैव नॉट बीन यूजिंग इट। इनफैक्ट अगर आप अपने बॉडी को देखोगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑसम मशीन्स एवर बिल्ट, बट वी हार्डली यूज इट टू द परसेंटेज और टू द पोटेंशियल इट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर। सो टीयर्स इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ बॉडी जो हमने बहुत किसी भी थॉट से, किसी भी विचारधारा या बिलीफ सिस्टम के चक्कर में हमने उसको मैक्सिमाइज नहीं किया है। सो अगेन आई एम सेइंग, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस टू क्राई। क्राइंग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, फिजिकल लेवल, देन देयर इज इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल में भी कुछ लेवल का होता है, वेर यू आर क्राइंग आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, देन यू आर क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? Then there's another level of crying which is there, and that is the highest level of crying, which I always feel। And मेरा सबसे कहना है, मेरा in fact if you were to be there in my life in the spiritual retreat which we have once in a year, then I take you deeper into it। और हम इतना रोते हैं, we cry out of laughter, we cry out of happiness, we cry out of bliss, we cry out of gratitude, and that is the highest level of tears। तो आंसुओं में भी सबसे उच्च लेवल का जो आंसू है वो है द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के भाव से निकलने वाले आंसू। कि यो आप इतने थैंकफुल हो, इतने थैंकफुल हो, चाहे वो आप माँ बाप के प्रति हो, चाहे किसी टीचर के प्रति हो, चाहे प्रभु के प्रति हो, आप इतने कृतज्ञ हो, इतने ग्रेटफुल हो कि आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना कृतज्ञ हूं। एंड यू जस्ट आर इन द स्टेट, और आंखें बंद करते हो, ऐसे झड़ झड़ आंसू निकलते, because you can't express how grateful you are। Isn't it awesome कि दिन में एक बार तो ऐसे बैठे हो, दिन में एक बार, for a few minutes, and we wash our eyes with the tears of gratitude, just once in a day। क्या आप बैठे हो and you just being there and you say thank you God for all that which you have given। एंड आप थैंक यू कह नहीं पा रहे हो शब्दों से, बिकॉज वो फीलिंग इतनी इंटेंस है, इतनी इंटेंस है कि वो आंसुओं के थ्रू निकल रही। इमेजिन इफ यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर लव थ्रू टीयर्स, दैट हाउ मच somebody means to you, how much somebody means to you। और आपने सिर्फ कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके आंखों के आंसुओं से अगर वो एक्सप्रेशन ऑफ लव पास हो गया, इससे प्योर एक्सप्रेशन क्या होगा, इससे बढ़िया एक्सप्रेशन क्या? Now you understand what it is to be a human being। तो सिर्फ ये चलना फिरना खाना, दिस इज नॉट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ये तो सारे जानवर करते हैं, इनफैक्ट हमसे अच्छा करते हैं, हमसे अच्छा करते हैं वो जानवर। माय पेट, आई गॉट अ बीगल, उसका पेट खराब होता है ना, तो उसको मालूम है उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो बाहर जाता है, वॉक पे ले जाते हैं उसको, तो वो कोई घास खा लेता है, अपना पेट ठीक कर लेता है। So even a pet knows how much to eat, what not to eat, when not to eat, except human beings। ये वो सांड है जो कुछ भी खाता है, कभी भी खाता है। So I want you to understand that it's not that you get up in the morning and you live your life and you say I'm a human being। The human being is blessed with many more aspects।
and you're realizing it and you're living by it. That is what is called human. तो हमने अभी क्या कर दिया, अपना को ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन मशीन बना दिया है. हम जिए जा रहे हैं, एक तरीके से जिंदगी जी रहे हैं. So there's no difference between yesterday and today. There's no difference between yesterday, today and a week before, a month before. It is just like 1 year you have lived into 20, 30, 40, 50 times. You're not having any new experience. It is just 1 year into many years. So when your birthday comes, you got to ask yourself that is it another year lived, which was lived earlier? Was it a repeat of the earlier years, or was it a new year actually? और अभी तो 30 दिन बाद न्यू ईयर भी आने वाला है ना. So you got to ask yourself, what the hell am I celebrating this new year for? Was it actually a new year, or was it a year which was full of old habits, old thoughts, old living style, or was it actually a new year? कहते तो आप सब हैप्पी न्यू ईयर हो ना, लेकिन क्या वो न्यू ईयर होता है, या इट्स अ हैप्पी ओल्ड ईयर जैसे आपने पहले जिया था. So as human beings, we got to live like human beings. And out of that, I've just shared with you two things. Two things. One, you got to smile a lot. You got to laugh a lot more. That's what we can do. And if you're not doing that, isn't it a shame? Second, human beings cry. They cry out of pain. They cry out of anger. They cry out of frustration. They cry out of, something which they have lost. They cry out of sadness. They cry out of happiness. They cry out of love. And they cry out of thankfulness. See the levels? So from the physical level to the negative emotion level, to the positive ones like happiness, to the love, and the topmost, gratitude. If you can cry out of gratitude, you have arrived. You have reached the highest level possible of tears. तो मुझे लगता है दिन में एक बार तो ऐसा बैठो शांति से, just sit, close your eyes, and just be grateful. And take that emotional intensity to such a level where the expression happens through your tears. इससे बढ़िया धुलाई नहीं है, इससे बढ़िया सफाई नहीं हो सकती आंखों की. The tears of gratitude. हाँ जी, मेरे साथ हो कि नहीं? So again, just those those who have logged in late, right? I'm sorry, I'm not able to read your names. I'm not able to read your comments because this is a recorded Happy Minds. शायद मैं बताता नहीं तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता, but I just thought of sharing this with you. Those who have logged in late, I was not in a position to make it live for the HM, for which you're watching right now because of some emergency. And so I thought of recording it, and here is the recording which you are watching. And we're doing it for the first time. I don't know how it will be, but I thought, करते तो है, जब तक करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा. Not that it should become a regular feature, but you never know how things are. But the HMs should continue, and that's what it is. So keep on typing what you feel, what you are experiencing right now after listening to me. आपको क्या फील हो रहा है? कुछ हिट हुआ, कुछ कनेक्ट हुआ, कुछ did it make sense? What will you do from this? What will you do from this weekly shot? Right? The coming week, the week which went by, did you laugh a lot more? Did you smile a lot more? वो किया क्या? Very conscious of what you learned last week, right? What will you do to be conscious this coming week and the weeks after that? That these two simple aspects of being a human being, that I can laugh a lot more, I can smile a lot more, and I can cry a lot more. Now, I'm not saying that कहीं भी जाके रोना चालू कर दो, but I feel that this is one thing which we have kind of हमने दबा के रखा है इसको, right? So at least we can maximize on this as much to our benefit. And I feel रोने के बाद ना बड़ा लाइट लगता है. रोने के बाद एकदम ऐसा आंखें भी साफ हो जाती हैं, दुनिया भी साफ दिखती है, और मन भी बड़ा हल्का हो जाता है.
So don't take tears lightly. Tears are something beautiful. And I feel that आप सब mature हो, आप सबको समझता है कि tears कब आने चाहिए, किसके सामने आने चाहिए, वो आपके maturity पे छोड़ता हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि tears are a beautiful sign of being human, तो जो मिला उसके सामने पकड़ के अपना रोना चालू कर दिया. I'm not saying this. You are mature enough to understand, but I'm saying don't suppress tears. दबाओ मत. आ रहे तो आने दो. It will make your internal organs healthy. That's for sure. Hmm? Laughter will make your internal organs healthy. Crying will make your internal organs healthy. And the third thing which I want to share with you today on what is being human. What is being human? There are many, many things, but the third thing, which is so very beautiful, that out of all creations, we human beings are the only ones blessed who can outgrow our nature. So everybody is born with a nature, right? लेकिन हम ही हैं जो अपने नेचर से हम आउटग्रो कर सकते हैं, हम कुछ अलग बन सकते हैं. Isn't that an amazing part of being a human being? कि अगर हम हमारा एक नेचर का हिस्सा है where we are not very strong in meeting people and talking with people, we can outgrow that. We can outgrow and we can learn communication. We can connect with people. If we have a nature of being submissive in life, we can outgrow that nature and we can become a lot different than being submissive. We can be outgoing in life. अगर हम people shy हैं, we can outgrow that and we can meet people, talk to people. If we are not risk takers, we can outgrow that and become risk takers. So हम कोई भी नेचर में पैदा होते हैं या नेचर से जीते हैं, हमारे पास काबिलियत है कि हम उस नेचर को पीछे छोड़ सकते हैं और एक नया नेचर बिल्ड कर सकते हैं. We can learn. Have you ever seen, ever heard, ever thought, ever read that a German Shepherd wants to become better German Shepherd? नहीं ना, that is born. वो अगर वो अच्छा भी बनेगा ना German Shepherd, तो किसी इंसान की वजह से बनेगा, किसी इंसान ने उस पर एफर्ट डाला और उसको और सिखाया और समझाया. बट वो खुद से तो नहीं समझ सकता, खुद से वो सीख नहीं सकता, खुद से वो अच्छा नहीं बन सकता. एक इंसान ही है जो अपने नेचर को आउटग्रो कर सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम वेयर वी वर एज ह्यूमन बीइंग्स टू वेयर वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स. हमने आउटग्रो किया ना, गुफाओं में रहते थे, गुफाओं से रहते रहते अब यहां तक पहुंच गए. वी हैव आउटग्रोन आवरसेल्व्स. सो यू गोट टू आस्क योरसेल्फ, where will I outgrow myself the coming year? Where will I outgrow myself the coming week, the coming month? क्या वो चीज है जिसको छोड़ दूं, क्या वो चीज है जिसको पकड़ लूं? I remember I was reading about Leo Buscaglia long back, one of my favorite authors, and I was fortunate to have his books with me somewhere in early 1998, 99. तो मैं उनकी काफी किताबें पढ़ता था. And then in one of his books, he writes this beautiful thing, and it touched me so much that time, and it has become a part, and it has stayed with me for since then. He says they were born to Italian. He was born to Italian parents, and they were staying in US as migrants. And he says we didn't have all the luxuries which a normal family would have in US. Migrants say father was a waiter in a restaurant, and mother had 9 children to take care of, and तो बहुत मुश्किल के दिन थे, लियो लिखते हैं. And he says कि कभी कभी खाने में बड़ा मुश्किल होती थी कि क्या खाएं. मतलब we would just have one meal a day and that too one bread. तो मुश्किल के दिनों में 1920 जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, तो ही सेज तब में एज 9 किड्स हम लोग बड़े खुश होते थे अगर हमें 2 ब्रेड मिल गई या हमें साथ में सब्जी मिल गई या कुछ हो गया, तो इट वुड बी अ फीस्ट फॉर अस. बट ही सेज इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी हैड अ रिचुअल, एंड द रिचुअल वाज हम रात को खाना साथ खाते थे. माय फादर वुड इंश्योर कि सब लोग जो है 8-9 बच्चे and parents sit there on a table and we would have meals together. That's what Leo says. And he says कि खाना खाने से पहले my father, Leo says about his father,
So Leo's father would ask every child, what did you learn today? And he says, we all would be so into it because खाना वही होता था. And we would be hungry from morning till evening. क्योंकि खाना सुबह से मिला नहीं होता था. तो उस भूख में हम कोई भी इंसान, और फादर का रूल ऐसा था उस लियो के कि अगर आपने कुछ सीखा नहीं, you can't have food. So he says, just once in my life, I remember I was so very hungry that I forgot कि मैं क्या share करूं. And he asked me, Leo, what did you learn today? And he said, I was about to put the bread in my mouth, and I realized I have nothing to share. I kept that bread down, he says. इतनी भूख लगी थी, फिर भी मैंने ब्रेड को नीचे रखा. And I got off from my dining table, और मैं भागा अपने कमरे में गया, और मैंने एटलस खोली, और एटलस में मैंने देखा कि नेपाल एक कंट्री है दुनिया में, और नेपाल जो है उसका कैपिटल काठमांडू है. एंड वो भाग के आया अपने फादर के पास, ऑल ऑफ 7-8 years. बच्चा जो भूख से सुबह से तड़फ रहा है, वो बच्चा रोटी छोड़ के गया, कुछ सीख के आया, और अपने फादर को बोलता है, there's a country called Nepal, उसका कैपिटल काठमांडू है. And his father says, eat. And he says, that's what I picked up in my life. He says, now when he wrote a book, he was 70s. He says, now even at 70, I sleep with my stomach full. But before I put my sheets on, I have that question of my father in my mind. Leo, what did you learn? What's your learning for the day? Isn't it amazing? If you can have this in your mind, if you can have this as a part of your life, that you ask this question to yourself, what did I learn today? Because we human beings we are the only ones who are blessed to outgrow our nature, to outgrow who we are. We can learn every day something or the other, and live our life as per that learning, live a life out of a higher version of being ourselves. And it will be so helpful. और मैं हमेशा कहता हूं, और आज भी आपसे कह रहा हूं, हमारा अच्छा ना बनना बहुत से लोगों के लिए नुकसानदायक है. मैं दोबारा बोलता हूं तुम्हें, हमारा अच्छा ना बनना is harming many people around us. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अच्छे नहीं बन रहे हो, आप कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आपकी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे आपकी वजह से. आपके वेंडर्स हैं, उनको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा आपकी वजह से. आपके कस्टमर्स हैं, उनको अच्छा पैसा, उनको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपकी वजह से, क्योंकि आप नया कुछ सीख नहीं रहे हो. और ये देश भी आपसे कुछ लेने से रह जाएगा, क्योंकि आप अच्छा नहीं कमाओगे, अच्छा टैक्स नहीं दो. अगर आप पेरेंट हो, आपके अच्छा पेरेंट ना बनने से उन बच्चों के साथ कितना नुकसान है. So I always feel that we harm the world around us. हमारा अच्छा ना बनना, इसके वजह से बहुत से लोगों का नुकसान. अच्छे बनो यार. And that is what happy minds are. Every week a shot to make you better, to make you much more than who you are, to make you become much more of who you can be. और अगर हम अच्छे बनते गए, अच्छा हम कुछ सोचते गए, सीखते गए, तो फिर कितने लोगों का फायदा हो. So I want to leave this happy minds with this thought in your mind, that becoming better is a moral responsibility. Becoming better is no more a choice. It's a must. It's a must that you should become better. And the more you become better, the more people around you benefit. So this is what I had for Happy Minds for you today. And I'm sure this recorded version of Happy Minds would have served its purpose. And you have some gems to take home. You have some insights to make your life better the coming week. And I'm looking forward to my batch, which is starting, which we have a leadership batch. We're going to break records. We have almost around 90 odd people who have joined in. We are way beyond batch full, you know. But still, agar aapka, you know, we still have few more seats. My team is saying, sir, we will stretch it to 100 people. Aisa wo keh rahe hain. We are around 90. If you really want to make it, be there, and we'll create some hangama on the leadership side. Agar aapko lagta hai
कि आपको आना चाहिए, then be there as an entrepreneur, as a leader, be a part of this beautiful life transforming journey on leadership. But your way of handling people will change. Your way of dealing with people will change. Your ability to extract a lot from people will be so very high. And I think that's what as leaders we got to do. हमारा काम है हम लोगों से उनका पोटेंशियल निकालें. ये एक लीडर का काम है. तो वो सीखना बड़ा जरूरी है. So if you want to come for that. And of course we have the family happy minds coming on 17th, which is also there. If you want to be a part of it with your family, you want to make the next year coming year very powerful, then be there. You can register. My team will put the link in the chat. You can register with your family. बच्चों को लेके आओ. Let's together as a family grow, and it's going to be a beautiful session where I'm going to talk on how to make 2024 a very powerful year. We'll plan, we will talk, we will laugh, we will learn, we'll do a lot of things on that day, and together as a family we'll set some objectives for the year to come. So that's what it is all about. Till I meet you next time. I'll meet you on 8th of I think 8th is a Saturday, right? So I'll meet you on 9th. I'll meet you on 9th morning, or 8th. So I just got confused. So I'll meet you on 9th, and I'll meet you directly for the HM live, right? And till the time, take charge of your life and make sure that you give the best of you being a human being to the week that is to come by. This weekly shot should be a shot in your life where you live a life of a human being to the fullest. So till then, take charge, and I'll see you next Saturday. Love you all. Bye-bye. Get lost.